So 7 people are entered into the meeting room. Excuse me, ma'am. Only there are three students. Only two participants are here. But 8 people are entered into the waiting room. Ten people are waiting. Admit all. Students, unmute your mic. Sorry, mute to your mics. Mute it. Okay, we will start the lesson. Are you ready for it? Yes, ma'am. Okay. Unmute your mics, please. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Ma'am. If you have any question, then you can raise your hands. Now we will start the lesson. Students, from today to onward, I will take your class at the 12 p.m. Okay? Today we will read the English textbook. So open your books at the page number 48. It is review 1. I hope you can listen to me attentively and clearly. So open your books at the page number 48, review 1. Have your lead pencils in your hands to fill up the bookwork? I want you to be attentive in your class, having pencils in your hands, and open the books at the page number 48 of the PTB book. Review 1. Question A. A part is first of all, we will read the part A. Consult a thesaurus to find the synonyms of the following words. So, what are the synonyms? You all know about the synonyms. Synonyms are the students. If any student's mic is unmute, please mute it. And be attentive to your lesson. First question is about the synonyms, words and synonyms. So you know the meaning of the synonyms. Synonyms are the words having the same meaning. And thesaurus is a dictionary. When we see the meanings in a dictionary, we find the different synonyms of the words. So the words having the same meanings, these are called the synonyms. Here are the 5 words.
we will discuss their synonyms. You have to write these onto your book. The first word is street. Which lesson? Okay, I will share my screen. I also fill this for you. Okay. अब You can also see them. चलो ये क्या है? Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Here are the filling bookwork. You can watch it and fill your books. I will repeat all of these words for you. The first word is the street. Street means a lane, a road and a roadway, a passage. किसी गली को street कहते हैं. A roadway and a road. No. Second word is a market. Market means a mall, a mart and a shopping center. Do you ever अभी go दरवाजा बंद कर दे. Do you ever go to bazaar, a market, a mall and a shopping center? It is called a market. The synonym word for the boy is a lad, a male child or a lad. We call Then what is a lad? lad is a boy, a young boy, a youngster. Okay? Yes. We can also say a junior boy, a male child and a youngster and a boy. It is called lad. Okay? Yes. Okay. Then the word is beat. Beat mean to defeat someone, to knock down someone, to strike, to hit pound anyone. किसी को शिकस्त दे देना, किसी को हरा देना, to defeat someone. And pain is the word which means misery, a trouble, a hurt, a discomfort condition. Okay? So when you are in a misery, in a trouble, you say that I have pain. तकलीफ, दर्द, मुश्किल, बेआरामी, it is the pain. It is a body condition and also as well as it's an environmental condition. Troubles in our environment, in our homes, in our life, and any hurt, physically or mentally, it is a pain. So it has a lot of the meanings. I have write only two here for you. Now there is the B part of the review. It is also on the same page, the page number 48. B part, look up the meaning of the following words in dictionary. So we also have to write the meanings of these words. I missed here in my worksheet for you. So you have the pencils and write their meanings upon the words on the book. Okay. Also use these words into the sentences. The first word is ample. Ample mean in a large quantity, in a bulk. Enough, बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा चीज़ हो, बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, जिसको हम कहते हैं in a large amount, in a bulk. It is called ample. So ample mean enough, large, bulk. And sentence I made here for you, it is ample supply of food is necessary for a big population. एक बड़ी आबादी के लिए खुराक की जो बहुत ज़्यादा सप्लाई है वो ज़रूरी है. It means, this sentence means that people, a big population needs also a big supply of the food. If the population is big, then a big supply of food can fulfill their needs only. The second word is the batch. Batch is in fact a group of the same type. एक ही तरह के लोगों का जो ग्रुप होता है ना वो बैच होता है. और इसका सेंटेंस है a new batch of science students made a discovery. A new batch mean a new group of science students made a discovery. So all the students have the equal mental caliber. All the students have the equal mental caliber. So they need
So they made a discovery because they have equal mental caliber. So batch means a group of the same type of the people. Then there is the word passion. Passion means a strong emotion, a powerful emotion. Still, I think some participants are waiting. I admit all. Okay. Passion is uh, it is a mental condition. It means a desire, a strong desire, a strong emotion, a powerful emotion. बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ का शौक हो, कोई ख्वाहिश हो, तो वो हमारा पैशन बन जाती है, जज्बा बन जाती है, शौक बन जाती है. Its sentences, my passion is work hard to get my goal. Then there is a word rebate. Rebate means, उर्दू में तो हम इसको कहेंगे कि टैक्स की अदायगी में एक छूट दी जाती है. जब आप टैक्स पे करते हो तो उसमें आपको छूट दी जाती है, कोई प्रिविलेज दिया जाता है, कोई बेनिफिट दिया जाता है, उसको हम रिबेट कहेंगे. सो इन योर अकाउंट इन अ बैंक, in your account in a bank, you have if you have any return, any profit on your saved amount, then it will be a rebate. जो आपको अपनी सेव्ड अमाउंट के ऊपर कोई रिटर्न मिलता है, अमाउंट अजाफी अमाउंट मिलती है, एक्स्ट्रा मनी जो आपकी बैंक में पड़ी है, जो आप डिडक्शन कर रहे हो या जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके अलावा जो मनी आपको एक्स्ट्रा बैंक दे रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है, कोई प्रिविलेज दे रहा है, तो वो रिबेट है. Then there is the last word plenty. Plenty is also have the same meaning as the ample. So plenty mean a lot of, a big amount of anything, things in abundance. बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ का होना, बहुत बड़ा होना, ठीक है ना, ज़्यादा मिकदार, in bulk, in large quantity, it is also a plenty, a lot of the things. So the sentence we make here is, we need plenty of food stuff for calamity stricken people. Calamity stricken people are those which are in trouble due to some uh, Allah Almighty's any. For example, in those days, we are most people in Pakistan and in whole of the world are stricken by the coronavirus. So this is also a calamity, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आई है, तो जो आसमानी आफत होती है, जो अल्लाह की तरफ से आती है, कोई बला, कोई आफत, तो उसको हम calamity कहते हैं. तो ऐसे लोग जो किसी ट्रबल में, मुश्किल में अल्लाह की तरफ से फंस गए हैं, उनको जो फूड वगैरह की बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए, तो वो प्लेंटी, वो हमने सेंटेंस बनाया है. नाउ इट इज़ द सी पार्ट in the same page number 48 of the review. I want to see some participants. Are they joining us? Admit all. 2 students are waiting. Who are they? How many students are there? Okay. Now come to the C part. It is a pronoun. So how we will define the pronoun? Here also I have some definitions for you to understand your chapter and grammar fully. Can you see this? Yes. Okay. So here I write some grammars related to your review 1. I will send this to you after my lecture. Okay. So what is a pronoun? A pronoun. What is a pronoun? Do anyone tell me about the pronoun, definition of a pronoun? In fact, a pronoun is defined as a word or phrase that is okay. Here, yes. Someone is raising the head here. Okay. Abdullah Zafar. Yes.
Yes. Tell Abdullah. Unmute Abdullah. More. Sorry. Two participants raise hands. Okay. Hmm. First of all, why there is only a small? Okay, listen again. Okay, pronoun. We uh, will first of all discuss about the definition of the pronoun. Pronoun. Pronoun is a word used instead of a noun. So we use pronoun instead of a noun when it is also used to avoid the repetition from the illiteration. If you are writing an essay about any personality, your favorite personality like Qaid-e-Azam, Allama Iqbal, and some others as your parents, grandparents, some best friend, my best teacher, then in the first sentence you will write the name of that person, and in the other sentences you will use he or she in place of the name of that person. So the word used in place of the noun, it is a pronoun. It is used to avoid of the alliteration and the repetition, because when you use noun again and again, it will make it very boring. It will make the repetition and the composition very boring. जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं जैसे ही शी इट वगैरह है तो वो प्रोनाउन है. कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस आर ही शी इट दे यू me, that, this, it. For example, if there is a sentence that Ali likes coffee, I give here an example for you. Ali takes a cup of coffee every afternoon. This is the first sentence. And in the second sentence, we have he likes to have it before dinner. Here we use the word he for the Ali and it for the coffee. So the he and it are the pronouns used in place of the Ali and the coffee. So in this exercise, you have to underline the pronouns. The first sentence is birds build their nests in the trees. There, you will underline the word there. There is the pronoun used for the birds. So underline there. As here I solved it for you. Sorry, yes, this. Here the C part is solved for you. You can see this and underline the words by seeing this on your bookwork on the page number 48. The first word sentences birds build their nests in the trees. So underline the there in place of the birds. There is the pronouns used for the birds. In the second sentence, Shahid has lost his watch and cannot find it. Here his is the word used in place of the Shahid. So his is pronouns is a pronoun, underline it. Then at the end of the sentence is it. It is used as a pronoun for the watch. His for the Shahid, it for the watch. So underline his and it in the second sentence. In the third sentence, the horse fell down and broke its leg. Here we will underline the its because it's used for the horse. Its is the pronoun used for the horse. Number 4, Rabia, you are a lazy girl. Here we will underline you because you is a sentence, is a pronoun
used for the Rabia. And in the 5 sentence, Aslam brought his book and laid it on the desk. Here we will underline his and it, because his is used for the Aslam and it is used for the book as a pronoun. So underline all these pronouns. Now come to the D part. D part is on the page number 49 of your book. Make questions of the following sentences. He is running in the playground. They are sitting in the examination hall. He is watching television. She is writing a letter to her uncle. They are going to market for shopping. All these 5 sentences are about the present continuous tense. So what is the present continuous tense? Okay. Can you define present continuous tense? Anyone? Anyone? Who will tell me? Yes. Who will tell me the definition of the present continuous tense? No, anyone? Okay, I will unmute all of you. Okay? Okay. Okay. Who will define the present continuous tense? Habib, will you tell? Yes. Ma'am, sorry. Present continuous tense? Abdullah? Ma'am, yes. Ma'am, he is. Yes? Ma'am, first का he is. Yes. और मैम सेकंड का they और are कट गया. Okay. So first you need to understand the present continuous tense, okay? I will share here the definition of the present. 3 participants raised hands. Who are they? Who is raising the hand? Okay. Here is some more definition of the present continuous tense. Here you can see. Present continuous tense can be used to express something happening right now or to express something that is not happening right now. Present continuous tense में असल में वो बात है जो at the time of the speaking जो वाक़या हो रहा है. जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम जो काम जारी है जो हो रहा है वो present continuous tense है. As I am saying that it is raining outside, बाहर बारिश हो रही है, so the action is continue at the time of the speaking. And if we say that I am teaching to you, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. यू आर लिसनिंग टू मी, आप लोग मुझे सुन रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसके स्ट्रक्चर के लिए ये मैंने इसके कुछ पार्ट्स आपको बताने के लिए इसकी कुछ काइंड्स बताई हैं कि ये और किस लिए यूज होता है. एक तो ये प्रेजेंट टाइम में जो काम जारी है जो हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है. उसके अलावा अनफिनिश्ड एक्शंस हैं, जैसे कि आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, आई एम डूइंग दिस नाउ. तो ऐसे काम जो अभी जारी हैं, जो एक्शन अभी हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए, उसके लिए भी हम यूज करते हैं. उसके अलावा जो आरसी तौर पे जो सिचुएशंस हैं, जो टेम्परेरी एक्शंस हैं, जैसे आई एम लिविंग इन लंदन, मैं लंदन में रह रहा हूँ, उसने ये नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए रह रहा है, कब से रह रहा है, कब तक रहेगा, टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन रह रहा हूँ. ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. उर्दू में इस फिक्रे के एंड पे, सेंटेंस के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं.
उसके अलावा अगर कोई टेम्परेरी हैबिट्स है, जैसे इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, उसके अलावा हेयर वी मेंशन द दीज एट द मोमेंट। कुछ अनवाइंग हैबिट्स हैं, गुस्सा दिलाने वाली, यू आर फॉर एवर लूजिंग योर कीज, इस तरह की, ये आपके लिए बहुत जरा हो जाएगा मुश्किल। उसके अलावा फ्यूचर प्लान्स के लिए भी होता है कि फ्यूचर में आप कहते हो कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। हमारे फ्यूचर प्लान्स में भी इसी तरह से है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है, इट इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, माइनस साइन इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, and question mark is used for the interrogative sentences. So in the positive, first of all we will write the subject, then there will be the helping verb. Helping verb used in the present continuous tenses are, is, are, am. Then there will be the first form of the verb, then there will be ing, and then object. And in the negative sentences we use not after the helping verb, and in the interrogative sentences we use helping verb in start, then subject, then verb, and then ing, and then object. So here we have to write only the question of these sentences. The first sentence is, yes. So here are the questions. D part. So we have to make questions of these sentences according to the present continuous tense. He first is, he is running in the playground. He is running in the playground. In order to change it into a question, first of all, is will be in the start. Is will be in the start. Then there will be he, and then we use verb. Verb is run here plus ing, then preposition, and then there is playground as a object. देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज आर एम शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको पता है यहाँ पे पहले सेंटेंस में ही है, सेकंड वाले में दे है, उसके बाद ही है, फिर शी है, फिर दा, फिर दे है। ये सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला पर्सन है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको पता है कि आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, जो सिंगुलर ही शी इट वगैरह है, या यू जो ऐसा सिंगुलर यू है तो उसके साथ भी आर आएगा। तो ही इज रनिंग इन द प्ले ग्राउंड को आप इस तरह से करोगे, इज ही रनिंग इन द प्ले ग्राउंड, एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेकंड इज, दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। हियर आर विल बी इन द स्टार्ट, आर दे सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, एट द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। इन द थर्ड सेंटेंस, ही इज वॉचिंग टेलीविजन। is will be in the start, is he watching television, and at the number 4, she is writing a letter to her uncle. Is she writing a letter to her uncle? There will be a question mark at the end. Number 5, they are going to market for shopping. Are will be in the start. Are they going to market for shopping? Then there will be a question mark at the end. I hope you understand this. All these 5 sentences are here solved for you. Now there is E part. And this is the question: separate regular and irregular verbs from the given list and put them in the relevant column. There are two columns. One is for the regular verbs and other is for the irregular verbs. So first of all, we need to define the regular and irregular verbs. Here is the definition. I write for you. Okay. Some more participants are joining our class. Okay. Only 19 participants. Saram is admit. Okay. So watch this.
Yes. So there are the regular and the irregular verbs. Regular verbs are those verbs, you know that verb is an action. If we to do something, कोई भी काम का करना होना जो है वो verb है. उर्दू में जिसको हम फेल कहते हैं. रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स में डिफरेंस क्या है कि रेगुलर वर्ब अटेन डी और ई डी इन द सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म. जब हम रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे डी या ई डी का एडिशन हो जाता है. जैसे अटेन है तो वो अटेंड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा. हेल्प विल बिकम हेल्प्ड, play will become played, invite will become invited. So the regular verbs are those verbs which attain, which get d or ed in the second and the third forms. And irregular verbs are those verbs which cannot get d or ed in the second or the third forms, but they change their spellings. irregular verbs जो है उसमें d और ed नहीं लगता, उनके स्पेलिंग बदल जाते हैं. लेकिन इसकी भी 3 काइंड्स हैं. इरेगुलर वर्ब जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऐसे हैं कि जिनमें तीनों फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं, तीनों के स्पेलिंग सेम रहते हैं. जैसे कट है, कट 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 ही रहेगा. पुट है तो पुट 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 ही रहेगा. और सेकंड टाइप वो है कि जिसमें फर्स्ट फॉर्म के स्पेलिंग तो वही होते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसके स्पेलिंग सेम हो जाते हैं. जैसे बाय की सेकंड फॉर्म बोट है और थर्ड भी बोट है. बाय की सेकंड भी बोट है और थर्ड भी बोट है. सो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम. एज कीप की केप्ट केप्ट है. और इसी तरह third types of regular verbs are those which have the different spellings in both of the 3 forms, first, second, third. As there is take, took, taken. अब टेक के भी स्पेलिंग चेंज है, टुक के भी चेंज है और टेकन के भी चेंज है. सो तीनों फॉर्म्स चेंज है. ये इस तरह इरेगुलर वर्ब्स 3 किस्म के होते हैं. रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिसमें आपने डी और ईडी ऐड करना है. लेकिन इन रेगुलर वर्ब्स जो हैं इनमें आपने स्पेलिंग चेंज कर देने हैं. किसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, कोई ऐसा है कि जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके तीनों ही स्पेलिंग चेंज होती हैं. सो इन द relevant columns you will write, in the regular verbs you will write the word attain, help, play, invite. And in the column of the irregular verbs write the words buy, cut, keep, take. Here I also have some definitions for you. यहाँ मैंने ये डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, मैं आपको बाद में भेजती हूँ. देखिए here are the definitions and examples of the regular and irregular verbs. I have written all this for you. Then we will discuss the part F. It is about the punctuate the following sentences. It is about the punctuation. Punctuate the following sentences. So what is the punctuation? We can define punctuation as punctuation used when we write something in writing, in English writing, to separate sentences and their elements, and to clarify meanings we use marks such as full stop, commas, brackets, exclamation marks, capital letters. These things are called the punctuation. हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर्स का करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं. ये सारी चीजें जब है एक राइटिंग को क्लियर करने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके मीनिंग्स हमें क्लियर हो जाए, हम ये यूज करते हैं. एक्सक्यूज मी. हेलो, यस मिस सर. वालेकुम सलाम जी. क्लास चल रही है, हो रही है. बच्चे हैं, ज्वाइन भी किया हुआ बच्चों ने, 20 बच्चे हैं जी. अच्छा, 20 आ गए हैं. मैंने सबको असल में एडमिट ऑल कर दिया है ताकि सभी आए जाएं. साथ साथ एडमिट कर भी रहे हैं, लेकिन 20 आए हैं. ठीक है.
Okay. Students, I unmute all of you and be silent and listen the lecture with full attention. Okay. So we Excuse me are मैम, आप synonyms दोबारा दिखा दें. yes. Sorry. आप synonyms दोबारा दिखा दें. Synonyms मैं आपको notes भेजूंगी बेटा. I will send you notes after our meeting will end. I will send you notes. Okay. Yes. Now we will. Now come to the punctuation. Punctuate the following sentences. First is, alas, we have lost the match. As you can see that here I solved all the punctuation for you in the F question. Can you watch this worksheet? I opened in my window. Students, Yes, ma'am. can you watch this worksheet? Yes, ma'am. Yes. Okay. So the question F, it is about the punctuation. The first sentence is, alas, we have lost the match. Here the word alas, A is in the small, A is small letter. When we start a sentence, always the first letter always in a capital one. So cut this A and write the alas A. A will be capital in the alas. Then after the last there will be an exclamation mark. We use exclamation mark for a sudden joy and happiness, and sometimes for sudden wonder, for sudden praise, for sudden grief. जब हमें कोई अचानक खुशी, गम का इजहार होता है या हैरत का इजहार होता है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. अलास का ये आपने कैपिटल कर लेना है क्योंकि हमेशा एक जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अलास के बाद अलास मीन अफसोस, गम. इट इज अ इमोशन ऑफ grief and misery, so we will put an exclamation mark after the alas. Then there will be we have lost the match, and there will be a full stop at the end of the match. Second sentence is, Islamabad is the capital of Pakistan. Here is small I for Islamabad. Change it into the capital I because a proper noun is always start with a capital letter. Use capital I for the Islamabad and capital P for the Pakistan. Capital P for Pakistan, capital I for Islamabad. And put a full stop at the end of the second sentence. Hey Hina, stop. Third sentence. H in here will be in capital. आपने जो है का H है, हाँ इसका आपने वो कर लेना है कैपिटल में, और हिना का H कैपिटल में होगा, और हिना के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट है, इज अ काइंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. जब हम किसी को सलाम दुआ करते हैं तो तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. सो आफ्टर द हिना पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन and at the end of the stop there will be a full stop. Back to at 7 o'clock in the evening. And in the fourth sentence, I will come back at 7 o'clock in the evening. I is in small, convert it into a big I. I will be in capital letter. I will come back at 7 o'clock. There will be a apostrophe, comma, after the O, clock in the evening, and at full stop at end of the evening. The sentence number 5, my email address is cgrs@yahoo.com. Yahoo.com. Yahoo, there is a dot. There is a dot after Yahoo. The food looks tastes delicious. It's Don't talk. delicious. Always dash to be the best debater. My M for my will be capital because always the sentence starts with a capital letter. M for my will be capital. My email address is cgrs@yahoo. There will be a dot after the Yahoo and a full stop after the com.
Now come to the G part. Come to the G part. It is about the fill in the blank with linking verbs from the given list. So what are the linking verbs? Linking verbs. We can define linking verbs. They connect subjects with the word that gives information about the subject. ऐसा जब सब्जेक्ट और नाउन जो होता है, सब्जेक्ट और नाउन के बीच में रिलेशनशिप के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वर्ब की सूरत में, वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट का और नाउन का आपस में लिंक बना देते हैं. नाउन कैन आल्सो बी एन एडजेक्टिव और रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ कंडीशन. The relationship of a subject with a noun. We use the linking verbs. And that noun can be in as a condition, as a relationship, as an adjective. जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, the food tastes dash delicious है ना, तो यहाँ पे taste like words उन्होंने दिए हुए हैं, keeps, taste, proof, looks, sound. The food tastes delicious. Second is they always dash to be the best debaters. They hear the word we will use, it is prove. Bilal dash quiet. Bilal looks quiet. My neighbors dash very angry. My neighbors sound very angry. My sister keeps her books safe. Keeps. So the words taste, proof, looks, sound, keeps. These are the linking words which show the relationship between the subject and the adjective. ओके ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये लिंकिंग वर्ड्स हैं. आप इनको यहाँ से देख के फिल कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बाद में नोट्स भी भेज दूंगी. नाउ कम टू द एच पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन. सो व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन चाहिए होता तब कुछ भी नहीं मिलना. हु विल डिफाइन द प्रेपोजिशन? ये बताएगा. आई वांट टू इनवाइट एनीवन. Yes. कोई बताना चाहेगा? Okay. So first of all, define the preposition. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing indicated by its stands in regard to something else. Preposition जो है ना, ये noun और pronoun से relationship बनाते हैं. जब हम कहते हैं my legs are under the table, book is on the table, the fan is above our heads. तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और जो बहुत जरूरी हैं. ये असल में बिल्डिंग ब्लॉक्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस. इसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. ये हर सेंटेंस में मोस्टली हर सेंटेंस में यूज होते हैं. दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो दे आर यूज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. The first sentence, the moon revolves dash the sun. Here will be around the sun. The moon revolves around the earth. Sorry. A fair little boy sat dash a tree. Here will be the preposition under in the second sentence. In the first sentence we will use around. In the second sentence we use under. And in the third sentence, Humpty Dumpty sat dash a wall on a wall. यानी Humpty Dumpty she is afraid of the door. Here the word will be students, don't talk. It has been raining since yesterday. Since is a preposition here. I left him over. Over is a preposition in the first sentence. So the preposition all this टाइम हो गया. 1 2 3 ब्रेक है हमारी. चलो
बस ही दे बकवास ना करो, आवाज आ रही है। Don't talk. It has been raining since yesterday. I left him over. So the words around, under, on, off, since, over. Here I also solve this for your ease. All these Is words are that the on a wall? preposition. He's So afraid from the I also tell you the definition of the preposition. Now there is the I part. I part, separate countable and uncountable nouns from the given list and put them in the relevant columns. sugar. अच्छा, अब countable uncountable nouns ये क्या होते हैं? Countable nouns are the nouns. Nouns means the name of a person, place, or thing. So countable nouns are the name of the things. Countable. Self. Fatma and Muntaha, don't talk. Countable nouns are those nouns which we can count. Here, rupees, pens, pencil, cup, these are the countable nouns जिनको हम गिन सकते हैं. ऐसे noun, ऐसी चीजों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे book है, table है, वो countable nouns हैं. So here in these examples, rupees, pens, pencil, cups are the countable nouns. Uncountable nouns are those nouns which we cannot count, जिनको हम गिन नहीं सकते. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. उनके लिए हम सम, मोर ये यूज कर सकते हैं. उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है या कम हो, लेकिन हम गिन नहीं सकते. जैसे शुगर है, हेयर है, साल्ट है, वाटर है, टी है. सो in these examples, sugar, salt, water, tea, these are the uncountable nouns. The J question is fill in the blanks with suitable words given below. It is on the page number 51 on the book. The words are hockey, bring, promise, life, depend. Put these words into the blanks. The first is मैम ये डिपेंड नहीं पेन लिखा हुआ है. okay, pain, sorry. Yes, pain. First is you should always fulfill your promise. So there will be promise in the first sentence. In the second sentence, go and dash a glass of water for me. Here the word will be bring. Bring a glass of water for me. So write bring in the second sentence. Third is he was playing dash in the playground. Hockey in the playground, because hockey is a game we can play this. The four is you should not dash on others. You should not depend on others. मैम माय इज नॉट डिपेंड, इट इज written pain. Pain? Yes, pain. Yes, ma'am, depend is not written. Okay, sorry, but in this book I have, there is the word depend and the sentence is also. Can you read the sentence in your book? Yes, ma'am, it was you should not dash on others. Okay, pain on others. Okay. Number 5, we must help the person whose dash is in danger. Here the word will be life is in danger. So the words in the blanks are promise, bring, hockey, pain, life. Now there is the K part. In the page number 51, fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given leaves. Adverbs of frequency. First of all, we need to know about the adverbs of frequency. Adverbs of frequency are exactly like the adverbs of time. For example, it does not tell us about the exact time, but we use some words as sometimes, often, never, always, sometimes. These are the adverbs of frequency. ये बिल्कुल adverb of time की तरह होते हैं, लेकिन exact time नहीं बताते. Sometimes, always, never, often, इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये adverbs of frequency की examples हैं. और इनके यहाँ पे 5 words हैं: never, sometimes, often, usually, always. Yes. So put these words in the blanks. The postman called dash. Often आएगा in the first sentence. In the first blank there will be word often. They dash come to see us. They usually, अमूमन वो हमें देखने आते हैं, मिलने आते हैं. She dash tries to do his best always. The train dash arrives late sometimes. The train sometimes arrives late. I have dash seen him. I have never seen him. Here the verb of frequency will be never.
L part, complete the following sentences by filling in a, an or the. So a, an or the, these are the articles. First of all, we need to define the articles. So articles are of three kinds: a or an or the. First is the indefinite articles. A or an are the indefinite articles. A is used for the consonant words. Before a consonant word we use a, and before a vowel sound we use an. अब आपको पता है कि हमारी A B C में जो A to Z 26 अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 5 वोवल्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो A जो है हम कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं और वोवल से पहले हम वोवल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं. इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. ये यहाँ पे मैंने ये आपके लिए ये बनाया भी है. हाँ जी, ये देखिए आर्टिकल्स की यहाँ मैंने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स लिखी हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. और डेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो दा है. दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल्स. अब दा कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये मैं अब आपको बताती हूँ. दा इज अ काइंड ऑफ द आर्टिकल यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग. किसी खास शख्स जगह चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे द कैनाल रोड है, द क्लब है, द बुक है. ये खास चीज़ों के नाम हैं तो हम इसके साथ दा लगाएंगे. उसके अलावा फॉर अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास एज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. यहाँ पे रोज जो है हम कहते हैं ना रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट मीन के सारे रोज, एक रोज सारी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे डॉग अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसा noun which represent the noun which represent whole of his class, it is also start with the definite article da. Da is also used before the names of the rivers, seas, oceans, groups of islands and the mountain ranges. We can say that the longest river in Pakistan, for example the West Indies, the Indian Ocean, Mount Everest is one of the biggest peaks of the Himalayas. We place Da before the Himalayas. And Da is also placed before the names of the books and the newspapers. The Dawn, the Junk newspaper, the English book. And it is also used before the name of the unique things as the sky, the earth. Sky, earth unique चीज़ें हैं इसलिए हम इनसे पहले भी दा लगाते हैं. तो ये यूजेस ऑफ दा थे. मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, मैं आपको भेज दूंगी और आपने ब्लैंक्स में इस तरह से इसको फिल करना है. पहला क्वेश्चन है he can play dash flute, a flute, because F is a consonant sound. Copper is a useful metal. A will be used before useful. He is an European. European starts with the E, a vowel sound. So we will put an in the blank. His father is dash SDO, an SDO. S is Yeah, but STO doesn't start with a vowel. yes. S is not start with a vowel, but when we pronounce this word SDO, S starts with the word A. S अलिफ से start हो रहा है ना. आप Yes. S पढ़ते हो तो S को आप पहले अलिफ आ रहा है. तो ऐसे साउंड जो वोवल साउंड दे, जो वोवल वर्ड ना हो लेकिन साउंड वोवल दे. आपको आ रही है मेरी आवाज? Yes. हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा वर्ड जो कि वोवल ना हो लेकिन वोवल साउंड दो. जैसे ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट मैन. ही हम कहते हैं ना ही इज एन ऑनेस्ट मैन. हालांकि ऑनेस्ट H से शुरू हो रहा है, H एक वोवल नहीं है, लेकिन हम H से पहले एन लगाते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट आवाज O की दे रहा है, H साइलेंट O की आवाज दे रहा है, वोवल की आवाज दे रहा है, साउंड वोवल दे रहा है. इसलिए तो SDO में जो S है ना वो वोवल साउंड दे रहा है, वोवल वर्ड नहीं लेकिन साउंड वोवल दे रहा है, इसलिए हम उसको एन से स्टैंड करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? Yes. Okay. My brother is in the army. Army. We here write the because the army is a proper noun. एक खास ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है, एक खास क्रू है, ग्रुप है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम उससे पहले दा लगाएंगे. लास्ट
दे रन डैश NGO एन NGO। अब यहाँ एन एक वोवल साउंड नहीं है, लेकिन हमने एन लगाया है, वो इसीलिए लगाया है कि एन जो है वो वोवल साउंड दे रहा है, वोवल वर्ड तो नहीं है। एन वोवल वर्ड तो नहीं है, लेकिन साउंड वोवल की दे रहा है। ए अलिफ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन NGO कहा है इसको। So the words are articles used in these blanks are a, an, the, an. So this is our today's lecture. I hope you understand all. After this lecture, I will send you notes of the grammar and the worksheet of the review in the group. I will share it. And students, you need to write the word sentences. There is a question about the word sentences. You need to write these word sentences into your English notebook. Okay. And tomorrow at 12 o'clock, we will meet again with the lesson number 5, traffic sense. So tomorrow you have your books and pencils. I hope that in tomorrow's lecture, we will prove ourselves best and better than before. Okay. So goodbye to all of you. Pay attention to your studies. Okay. Any question if you have? Any question? No? Send synonyms. Ma'am, please send the synonyms in the group. Yes? I will send you worksheet of the synonyms and the whole of the review, okay? After the meeting. Goodbye.